Good morning, team. NMDC is exploring lithium reserve in Australia. They already own a mine in Australia where they are a majority stakeholder. It is Mount Bevan in Australia. So lithium is very important for electric vehicle and other products also. So I think they have been doing many things. Even they have a diamond mine here where they have got some clearance. So at current level of 111, 112, with a dividend yield of almost 8%. Last year, it was very low. They paid only 3 rupees 75 paisa. But previous year and all, they were paying almost 14 rupees. So I think average they will pay 10 rupees going forward. As NMDC steel has been demerged, they don't have major capex. So their free cash flow will be paid as dividend. So I think NMDC is a stock for people looking at dividend yield as a major thing. One interesting news I read that discount for cars are back to 2019 level. So they are saying 20,000 to 1 lakh is the discount depending on the car model and the location of the dealership. This is very negative for Maruti in the listed space. Because Tata Motor, there are few models where waiting list is there. The other car major manufacturer are not listed in India, like Hyundai and Kia or Volkswagen. So the only major listed player is Maruti, which has almost 50% market share in cars. So I think car manufacturers are a bit negative, but we are positive on two-wheelers, mainly Bajaj Auto, TVS Motor and Eicher. Ethos Watches opens first boutique in Surat. It is spread. It is spread across 3,658 square feet. IndusInd Bank signs 100 million loan agreement with JPIC to facilitate growth of Japanese construction equipment companies in India. So this branch will operate from Gift City and it will be funding Japanese construction facility, but for which they have got funding from JPIC. CMS Info, CMS Algo OTC application now secures 30% of ATM in India. So this monitors all the ATMs using Algo. Positive for CMS Info Systems. Ramco Systems, yesterday I think we said they got some order for global payroll business. Now they have appointed 2 senior leaders for its global payroll business. Reddington stock which sells Apple phone in India, that will be in focus. Apple, after Mr. Tim Cook has visited India, they have opened their exclusive showroom in Mumbai. Today, he will be opening one more exclusive showroom in Delhi. If this trend continues, Reddington already they have only 2% margins, operating margin. It will be a stressful business for them. So I think Reddington stock yesterday itself started to react, and Reddington doesn't have a promoter per se. So and the stock trades already very cheap at 8 times, but the future looks something bleak. Bharat BBTC, which is a group company of Bombay Dye, they have sold few properties, T real estate in Tanzania. Huge real estate, but the value they will get is 10 crores, not meaningful. Softtech Tech Mahindra jointly secures a deal to deliver technology services for Finnish company. Finolex Cable announced a 200 capex to expand its manufacturing capacity at Urse plant that serves solar power, automotive, optical fiber segment. Titan Jewelry arm Tanish to reinstate advance booking option. The gold prices have been going up, so they are bringing back their advance booking option so that you can lock in your gold price. This is head of Akshay Tidhi. Positive for Tanish.
There are few stocks yesterday where they have given, after a very good bottom formation, they have started to move. So that is Gland Pharma and Green Panel. So if they start to correct, then there will be option. Even Divi's Lab, after a very long time, has started to perform. So pharma, there are good traction, pharma and pharma chemicals, but we need to watch out how these pans out. With that, over to you, team. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं। फर्स्ट अपडेट है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के ऊपर। कंपनी ने रिपोर्ट किया है 22.8% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन और उनका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 262.7 करोड़ है ये क्वार्टर का। और ये इम्पैक्ट बेसिकली वीक टॉप लाइन, उसके अलावा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस था वीक, उसके वजह से था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू क्वार्टर का ड्रॉप हुआ है 0.77%, जो ₹885 करोड़ है कंपेयर टू लास्ट ईयर हम लोग कंपेयर करें तो। और ये बेसिकली डिपेंडेंट हुआ है लोअर फीस एंड कमीशन इनकम के कारण। और ऑपरेटिंग फ्रंट में देखा जाए तो एबिटा है वो फॉल हो चुका है 2.7% ईयर ऑन ईयर, 548 करोड़ है ये क्वार्टर का। और जो मार्जिन डिक्लाइन हुआ है 122 बेसिस पॉइंट से 61.93% है। बोर्ड ने रिकमेंड किया फाइनल डिविडेंड 9.25 पर शेयर। देन मैस्टेक के नंबर्स है आपके, जो रिपोर्ट किया है कंपनी ने 13.07% सिक्वेंशियल ग्रोथ। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 72.6 करोड़ मार्च क्वार्टर का। और बेसिकली उनका जो ग्रोथ है टॉप लाइन और ऑपरेटिंग इनकम भी काफी अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ देखी जाए क्वार्टर की तो वो ग्रो हुआ है 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 709.2 करोड़ का। और ओवरऑल ग्रोथ अक्रॉस ऑपरेशन हुई है। और ऑपरेटिंग फ्रंट में देखें तो इबिट इंक्रीज हुआ है 12.5% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर 105.92 करोड़। मार्जिन एक्सपेंशन 64 बेसिस पॉइंट से 14.93% है। कंपनी ने अनाउंस किया फाइनल डिविडेंड 12 रुपीज पर शेयर का। और प्रीति राव है उन्होंने रिजाइन किया एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से। द नेक्स्ट अपडेट है टाटा कम्युनिकेशन के भी नंबर्स आए थे। कंपनी ने 10.7% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 326 करोड़। बेसिकली ये लोअर और अदर इनकम जो है उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वीक, उसके कारण हुआ है। रेवेन्यू ये क्वार्टर का ग्रो हुआ है 7.2% से ईयर ऑन ईयर, 4,569 करोड़ का है। और ये डेटा सर्विस बिजनेस है। और वॉइस सोल्यूशन रिपोर्ट जो है कंपनी का सेगमेंट वीक परफॉर्मेंस हुआ है। ऑपरेटिंग फ्रंट में देखा जाए तो एबिटा है वो फॉल हुआ है 1% से ईयर ऑन ईयर, 1,034.22 करोड़। और मार्जिन फॉलिंग हुआ है 188 बेसिस पॉइंट से 22.64% ये क्वार्टर का। कंपनी ने फाइनल डिविडेंड 21 रुपीज पर शेयर रिकमेंड किया है। देन नेक्स्ट अपडेट है शक्ति पंप के ऊपर। वाटर पंप्स और मोटा मैन्युफैक्चर है उनको रिसीव हुआ है पेंडिंग $1 मिलियन प्रोजेक्ट के लिए एक्सिम बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ युगांडा है उनके तरफ से। कंपनी का ये जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हुआ है युगांडा में, जो बेसिकली सप्लाई करेंगे सोलर पावर वाटर पंपिंग सिस्टम अप्रैल 12 से। देन नेक्स्ट अपडेट है एनबीसीसी इंडिया के ऊपर। कंपनी को रिसीव मिला है ऑर्डर 207.92 करोड़ का, जो बेसिकली प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे डिसेबल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करेंगे टेरिटरी ट्रीटमेंट प्लांट वर्क्स पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पौंडीचेरी में। द नेक्स्ट अपडेट है अल्ट्राटेक सीमेंट के ऊपर। कंपनी ने उनका 2.2 मिलियन टन्स पर एनम कैपेसिटी है ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो स्टार्ट किया है ग्राइंडिंग यूनिट पिटलपुरा बिहार में। और ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो यूनिट 4.7 मिलियन है टन्स पर एनम। करंटली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय टारगेट है, बाय रेटिंग है टारगेट प्राइस है 7,965। टाटा मोटर्स से उनके जैगवार लैंड रोवर उसकी जो लग्जरी ऑटोमोटिव सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की, उन्होंने बोला है कि वो इन्वेस्ट करेंगे अराउंड 15 बिलियन अराउंड 1.53 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स में इलेक्ट्रिक फर्स्ट फ्यूचर में। देन इंडियन होटल कंपनी है उन्होंने साइन किया 2 न्यू होटल्स ढाका में, एक ताज और विवंता ब्रांडेड होटल्स होंगे। ये बेसिकली पार्ट होगा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स इंक्लूडिंग हाई एंड रिटेल। और ये ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा। 230 रूम्स ताज होटल की होंगी, ताज ब्रांड की होगी और 130 रूम विवंता होटल्स की होंगी।
और ये मल्टीपल न्यू क्लिनरी ऑपरेशन होगा सिटी में। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, 371 का टारगेट है। देन नेक्स्ट अपडेट है प्रेस्टीज स्टेट के ऊपर। कंपनी ने जो सेल्स बुकिंग है वो राइज हुआ है 25% और रिपोर्ट किया है 12,930.9 करोड़ लास्ट फिस्कल से। ये जो उनका हाउसिंग डिमांड है वो काफी स्ट्रांग है। और कंपनी ने रेगुलेटरी में फाइल किया कि बेंगलोर बेस्ड फर्म है, उन्होंने अभी तक का ये हाईएस्ट सेल था और हाईएस्ट एवर कलेक्शन था 9,805.5 करोड़ का। और सेल्स बुकिंग अभी स्टूड है 15.09 मिलियन स्क्वायर फीट और एवरेज रियलाइजेशन है 8,812 पर स्क्वायर फीट फॉर अपार्टमेंट्स, विलास और कमर्शियल सेल्स के लिए। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन्होंने वेडनेसडे अनाउंस किया कि उनको परमिशन मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो बेसिकली डील करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में। और ये जो रेगुलेटरी फर्म है उनको लेटर मिला है अप्रैल 19 को और ये कैटेगरी है अंडर सेक्शन 10 FEMA के। और कंपनी अभी डील करेंगे फॉरेन एक्सचेंज में और ये कंप्लायंस एप्लीकेबल रेगुलेशन होगा। GSW स्टील है, उन्होंने बोला है कि उनका कोई भी प्लान नहीं है सप्लाई करने का स्पेशल स्टील प्रोडक्ट्स रशिया के लिए। ये जंकिंग रिपोर्ट्स था, उन्होंने क्लेम किया कि प्राइवेट स्टील मेकर्स है वो एक्सपेक्ट है स्टील आइटम्स प्रोवाइड करेंगे कंट्री को ही। देन नेक्स्ट अपडेट है अदानी पोर्ट के ऊपर। अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड है, वो कंपनी के बोर्ड है, उनकी मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल को। उन्होंने कंसिडर किया है पार्शियल बायबैक सर्टेन डेब्ट सिक्योरिटीज से और ये इफेक्टिव होगा ये फाइनेंशियल ईयर के लिए। कंपनी के भी टोटल डेब्ट स्टैंड है अराउंड 2.27 बिलियन मार्च 31 तक। और कंपनी ने बोला है कि वो प्रेजेंटेशन ये क्रेडिटर्स है उनको मटेरियल रिफाइनेंसिंग रिस्क और नियर टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट है। तो सिग्निफिकेंट डेब्ट मैच्योरिटी है आउटसाइड क्रेडिट एनवेलप में। देन नेक्स्ट अपडेट है NMDC के ऊपर। NMDC जो कंपनी है NMDC जो कंपनी है ये लेवल पे हम लोग को अच्छी लग रही है क्योंकि उनका जो लिथियम रिजर्व कंपनी स्टार्ट करने वाली है उसके ऊपर वो एक अपडेट आया था। तो बेसिकली NMDC जो है एक्सप्लोर करेंगे लिथियम रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में और उनका जो मेजॉरिटी ओनर है माइन लोकेटेड ऑस्ट्रेलिया में। और ये इंडिया के लिए एक्सप्लोरिंग वे रहेगा सिक्योर सप्लाई लिथियम और ये बेसिकली रॉ मटेरियल यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में। और ये अराउंड वर्ल्ड के टॉप प्रोड्यूसर अक्वायर करेंगे ओवरसीज माइन और ये साउथ एशिया का नेशन एफर्ट होगा ग्रीनर व्हीकल्स पुश करने के लिए। डिविडेंड यील्ड कंपनी ये अच्छी देती है, तो डिविडेंड यील्ड पर्सपेक्टिव से NMDC को आप वॉच आउट कर सकते हो। देन इसके अलावा एक अपडेट आया था तो उसके ऊपर मारुति के लिए वो निगेटिव है, बट बजाज ऑटो टू व्हीलर स्पेस में TVS मोटर आइशर मोटर हम लोग को स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इटस वॉच है वो उनका जो फर्स्ट बुटीक है सूरत में स्टार्ट करने वाले हैं, अराउंड 3,658 स्क्वायर फीट का है। देन CMS इनको है वो जो ATM मॉनिटर करती है, साइन एग्रीमेंट किया है, तो ये पॉजिटिव अपडेट है। रामको सिस्टम है उसके ऊपर कल हम लोगों ने बोला था कि उनको कुछ ऑर्डर मिला है, बट इसके अलावा उनके ऊपर एक अपडेट है कि उन्होंने 2 सीनियर प्लेयर्स को अपॉइंट किया है ग्लोबल बिजनेस के लिए। देन रेडिंगटन जो कंपनी है एप्पल का जो स्टोर्स इंडिया में ओपन हो रहे हैं उसके लिए उसके वजह से रेडिंगटन के लिए नेगेटिव हो सकता है क्योंकि उनका जो हार्डली मार्जिन है 2% है अभी। और एक टिमकन जो न्यू स्टोर है वो दिल्ली में ओपन करने वाला है, तो ऑलरेडी कल स्टॉक में रिएक्शन देखा गया। तो इसमें कंपनी में कोई भी प्रमोटर भी नहीं है और फ्यूचर लुक है वो ब्लिक ही है, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट अपडेट है बॉम्बे डाइंग जो कंपनी है उनकी उसके ऊपर उसके जो बुमराह करके कंपनी है उनके जो प्रॉपर्टी सेल की है उन्होंने टांजानिया में, उसकी जो वैल्यूएशन अराउंड 10 करोड़ की है, तो इतना कुछ ये नहीं है। देन फिन केबल्स है, उन्होंने जो कैपेक्स 200 का वो अनाउंस किया है, तो ये बेसिकली सोलर पावर पे सर्व करती है ऑप्टिकल फाइबर सेगमेंट में। देन फार्मा और फार्मा केमिकल स्टॉक्स हम लोग को अच्छे लग रहे हैं, उसमें ग्लैंड फार्मा है, ग्रीन पैनल है, डिविस लैब है। डिविस लैब ने भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये स्टॉक को आप वॉच आउट कर सकते हो।
technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that there was again a decline in market close to 40 points, and Nifty has almost closed at 17,618 level. So what we are observing for the last three trading sessions, the market is trading with negative bias, but the fall is very narrow. So with this, looking at the chart pattern, what we believe the 17,500 will act as a support because that is the 50-day moving average. And on the higher side, 17,800 is been acting as a resistance. There is a lot of call writing which has been observed at 17,700, 17,800 levels. So for the time being, maybe for a 1 or 2 trading session, this will be the range for the market, 17,500 and 17,800. And as and when we see a breakout above 17,800, we should be heading for 18,200, 18,500. The larger range for the Nifty is 17,200 and 17,500. So bias for the day is sideways. Once we see a breakout above 17,800, then I believe there will be a positive bias and fresh buying will be seen in the index. Coming to Bank Nifty was down by close to 110 points in yesterday's session, and Bank Nifty has closed at 42,154. The good thing about the Bank Nifty is that the Bank Nifty is trading above 42,000 levels. And if we look at the derivatives data, this 42,000, there is a lot of put writing, and at 42,500, there is a maximum call writing. So this remains the immediate range for the Bank Nifty, 42,000. If just in case, if by any chance, if the 42,000 level are broken, then the technical levels where we are observing supports are at 41,000. So there is a possibility if 42,000 is broken, then we might see 41,000. The larger range for the Bank Nifty is 41,000 and 43,000. So for the day specific, for the weekly expiry, we expect a very flat kind of close. Nifty may close somewhere near 42,100, yeah, or maybe 42,000, and Bank Nifty within 17,600 and 17,700. So we are expecting a very flat close for the day. Yesterday we initiated a call in Lemon Tree, so we are liking the counter. So Lemon Tree is a positional bet. After that, Axis Bank is one counter which can be traded from the trading point of view for the 3-4 days kind of a trade. And so net the bias is sideways to sideways. Coming to this derivatives data, there has been a short build-up in yesterday's session in Nifty futures to the tune of 1.57%, and the put call ratio has gained a little from 0.82 to 0.84, but it is still under the 1 ratio. So we need to keep a watch on it. And coming to Bank Nifty also has witnessed a short build-up in yesterday's session to the tune of 2.5%. This was an addition of 69,000 shares. The put call ratio in the Bank Nifty has gained from 0.82 to 0.90 level. So slightly, but both the PCRs in Nifty and Bank Nifty is below 1 ratio. So it will turn positive whenever we see a close above 1. So even the derivatives data, it's kind of a doesn't suggest very clear picture where doesn't suggest any aggressive move on the other side. So with the combination of both the derivatives technical, we expect the sideways market to continue, and today expiry to be somewhere close to 17,600, 17,700, and Bank Nifty to somewhere close to 42,000, 42,100. So this can be the range for both the indices. So that's all from my end. I'll hand over to Archana madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, a few updates from my side, starting with ICICI Securities. The company has reported a 23% YoY decline in consolidated profit at 263 crores for this quarter, which was impacted by the weak top line as well as the operating performance. The net sales for the quarter dropped by 1% to 885 crores on YoY basis, dented by the lower fees and the commission income. Overall looks slightly subdued numbers. On Mastech, the company reported 13% sequential growth in consolidated profit at 73 crore in this quarter, which was driven by the growth in top line and the operating income. Revenue for the quarter grew by 8% QoQ to 709 crores. And EBIT has increased by 13% QoQ to 106 crores. The board has announced a final dividend of ₹12 per share for FY23. On Tata Communications, the company has registered 11% YoY decline in consolidated profit at 326 crore.
which was dented by the lower other income and the weak operating performance. Net sales grew by 7% YOY to 5,569 crores, driven by the data services business. However, the voice solutions reported the weak performance. On Shakti Pumps, the water pumps and motor manufacturer has received the pending $1 million for the project from Exim Bank on behalf of Government of Uganda. The company had commenced the operations in Uganda to supply the solar power water pumping system on April 12. On NBCC India, the company has received an order worth 208 crores for planning, designing, and execution of disabled accessible platform and providing tertiary treatment plant works for Public Works Department in Puducherry. On Ultratech Cement, the company has commissioned 2.2 million tons per annum capacity brownfield expansion at its grinding unit in Bihar, taking the overall capacity of the unit to 4.7 million tons per annum. We have buy rating on the stock with a target price of 7,965. On Tata Motors, Jaguar Land Rover, the luxury automotive subsidiary of Tata Motors, has said in a statement that it will invest 15 billion euro, which is roughly 1.53 lakh crore, over the next 5 years for an electric first future. So that bodes well for the company, and we may see some positive bias on the stock. And lastly, on Indian hotels, the company has announced signing of 2 hotels in Dhaka. The Taj and Vivanta branded hotels will be part of an integrated complex that will also include the high-end retail. These are the greenfield projects and should be operational in the next 3 to 4 years. Combined inventory addition with these 2 hotels will be close to 360 rooms. So overall, this bodes well for the company's earnings as well as margin expansion. We have buy rating on the stock with a target price of 371. So that's it from my side. Now I hand it over to Hitendra to take it over from here. Thank you, and over to you, Hitendra. Yeah, thank you, ma'am. Good morning, everyone. We'll continue with the update starting with Prestige Steel. Prestige Steel on Wednesday, sales has risen by 25%, a record to 12,931 crores in the last fiscal year on strong housing demand. This was held in a regulatory filing. The group also registered highest sale up by 25%, and their collections were up by 9,805 crores, up by 31%. The booking stood at 15.09 million square feet with an average realization of 8,812 per square feet for the apartment villas and the commercial sales. Secondly, AU Small Finance Bank on Wednesday said has received permission from the RBI to act as an authorized dealer to deal in foreign exchange, and AU they have been registered as granted a license for the authorized dealer category, that is AD1 under Section 10 of FEMA 1999 Act. JSW Steel on Wednesday said has no plans of supplying special steel to products to Russia, junking exports to claim the private steel maker has said in exports steel items to the country. This was said in a media report suggested that the company is not planning to supply any special steel to Russia. Adani Port said that company will hold a meeting on 22nd April to consider a partial buyback of its certain debt securities that is effective for this financial year. The total debt stands at 2.27 trillion as on 31st March. And last update on Bank of Maharashtra said it is going to raise capital in FY24 up to 7,500 crores via various modes, including the FPO or a QIP or a preferential issue. The bank may also seek to raise the capital through the issue of decent 3 bonds or the such securities based on the methods approved in the meeting.